I'm here. Totally is very exciting, and I'm very excited that there's some international artists on this platform. But what is more exciting is the turnout. Hopefully, this showcases that we do have concerned citizens of India, and they don't mind spend. They have the money to spend to help people. I think that we can see that, and hopefully there will be more initiatives like this to help India and make it progress. I'm actually more excited about the initiative. I'm very excited that they're here, but I'm also excited that there are so many artists coming together and so many dignitaries all over India from all over the world coming together to make the world more progressive. What did you hear what I was speaking about? You didn't hear it? It's about educating rural women and women just with literacy and with the internet, so that they can be more connected and they can progress a bit more, because right now they're disconnected. So the two causes that I'm the brand ambassador for this cause as well. I'm also the brand ambassador for Fight Hunger Foundation and Colors Foundation. So it's just, I think illiteracy and malnourishment and hunger is something that plagues India. These are basic things that need to be addressed, and that's why I'm here. I've just flown from LA and come directly to this platform. नहीं, मेरे को नीचा के लिए मिला, but फैशन आइकॉन के मुझको बहुत अवार्ड्स मिले पहले भी. Gee, I mean, it's an award for Nija, but like I've said before, the film in itself is an award for me. So these are just cherries on top, and I find it very disrespectful to the memory of Nija Bhano to talk about it and blow my own trumpet. But thank you so much, guys, for coming here. After coming here. Of a crowd that huge. It was electrifying, and I kept saying, show me some love, because I wasn't there to perform, but to talk about a cause that's very close to my heart. And the highlight or the purpose of the Global Citizen Festival is really to motivate people to contribute to social change. And I was talking about a pet cause, so it felt great that I could reach this message across to people. Isn't it fantastic? Yeah, isn't it fantastic that, not just celebrities, not just those people who put the event together, but all the people who've actually been part of this social media campaign and sort of movement. I think hats off to all of them, more power to all of them, because this is a small way in which you can do your little bit to spread awareness about any cause that's close to your heart. Oh, most definitely. Which is why I was here to talk about the cause. I spoke about the cause, and of course there is a change. I met the Secretary of the Ministry of Drinking Water and Sanitation today, and he said, 600 million people used to defecate in the open in the past. Now that number has gone down to 450 million. That's change. Thank you. देखो, रॉक स्टार्स को इस तरह के ऑडियंसेस मिलते हैं, सो आई फेल्ट लाइक अ रॉक स्टार ऑन स्टेज. मैं कभी इतने बड़े ऑडियंस के सामने गई नहीं हूँ, मैं शोज़ भी नहीं करती, तो वो मौका मुझे मिलता नहीं है. तो जब मैं गई तो मैंने पूरा मज़ा उठा लिया. Yeah, I just want to go there and see some performances. Yeah, I'm not even aware of who all are performing, because a lot of people are also going out there and making pledges or talking about a cause.
So, but I know, you know, half the people from our fraternity are here, so that's great. You know, हम जब मिलते हैं तो अच्छी तरह मिलते हैं. I'm very fond of her as an actor. मुझे उनका डांसिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगता है. मैं उनसे कहती रहती हूँ कि तुम्हारी तरह मैं डांस करना चाहती हूँ बिंदास. एंड इट्स जस्ट हाँ, वो मैं भूल गई कंग्रेचुलेट करना. मैं भुलक्कड़ हूँ. बिल्कुल, मेरी शुभकामनाएं उसके साथ है. ऑफ कोर्स चिंतित है, क्योंकि ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर सब कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा कदम उठाया है. पर इतना सडन था, कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था, तो इस वजह से सब चौंक गए और थोड़ा वक्त लगेगा थिंग्स को सेटल होने में, चीज़ों को सेटल होने पे. पर उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द सेटल हो जाए, क्योंकि आई थिंक अ लॉट ऑफ अस आर प्रिविलेज्ड कि हमारे पास कार्ड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं. काफ़ी लोगों के पास नहीं है, जो डेली वेज वर्कर्स वगैरह हैं, उनको बहुत दिक्कत हो रही है. पर आई होप इट सेटल सून. यही कि मैंने किसी को भेजा बैंक में और यू नो पैसे एक्सचेंज करवाने के लिए 2000 के नोट मुझे मिले. वो अभी उसका चेंज कहीं नहीं मिल रहा. तो पर ये छोटी सी बात है. थैंक यू, यू टू. ओके. थैंक यू. मैं बहुत खुश हूँ कि डिमोनेटाइजेशन के बावजूद हमारी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना फोर्स दिखा रही है. एंड अच्छी बात है, ऐसा लग रहा है कि लोग अब एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं एंड अपने स्ट्रेसफुल लाइफ से बाहर निकल रहे हैं. आज भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, विच इज़ फैंटास्टिक. सो आई एम रियली हैप्पी. इट वॉज फैंटास्टिक. आई थिंक मैं जब स्टेज पे जाती हूँ थोड़ी पागल हो जाती हूँ, और मुझे जब ज़्यादा क्राउड दिखता है तो मैं और भी एनर्जी हो जाती है, अंदर मेरे आ जाती है. एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड हियर. आई हैड अ ब्लास्ट. मुझे स्टेज पर होना, परफॉर्म करना बहुत पसंद है. आई थिंक दैट्स माई मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ माई जॉब एंड माई प्रोफेशन. सो आई मेड द मोस्ट ऑफ इट. द क्राउड वॉज फैंटास्टिक. कुछ ज़्यादा ही मतलब एनर्जी एंड इतने सारे लोग. आई थिंक पहली बार मैं इतने बड़े क्राउड के सामने परफॉर्म कर रही हूँ. एंड इट वॉज अ ग्रेट फीलिंग. Absolutely. In fact, मैं backstage बैठकर सबके performances देख रही थी. Everybody is one better than the other. I'm waiting to watch Coldplay because I've been a fan of theirs since I was in school, and looking forward to it. Yeah. Thank you. वो तो मैं हूँ. Sorry. I think ये सब करने का मौका मुझे अभी मिल रहा है. एंड आई फील ऑलवेज I've always wanted to be on stage and sing on stage, and I feel कि now is the time. It's now or never. I'm in a position जहाँ पर मैं अपने सारे सपनों को पूरा कर सकती हूँ. And that's what I'm doing, one step at a time. And I'm really happy कि आपने नोटिस किया और कहा कि मैं रॉक स्टार लग रही हूँ, which is my ultimate dream. बिल्कुल हाँ, बिल्कुल जारी रहेगा. बिकॉज इट्स समथिंग दैट आई फील वेरी पैशनेटली अबाउट, और मैं करना चाहती हूँ, तो आगे जाकर ज़रूर जारी रहेगा. ओके. I will do the rap that I did on stage. मैंने क्योंकि हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, मैंने हनी सिंह के गाने को एकदम एक फ़ीमेल के पर्सपेक्टिव से पेश किया है. तो हेलो आंटी, नमस्ते, चलो काम की बात पे आते हैं. अब आप ये पूछेंगे कि आप कितने पैसे कमाते हैं. बस जितना आपका बेटा एक महीने में उड़ाता है, एक हफ्ते में मेरा टॉमी उतना खाना खाता है घर, है पैसा, है गाड़ी.
आप एक जैकेट में लड़का भेजो डील हुई हमारी आंटी घर है पैसा है गाड़ी आप एक जैकेट में लड़का भेजो डील हुई हमारी ओके बाय ओके सॉरी It's been an unbelievable experience. It's been a big honor to be a part of the lineup at Global Citizen and to see people respond in such a phenomenal way. I mean, I spoke about empowerment of the girl child through education, which is something I've been doing for 8 years through my foundation, One Foundation. We run a project in Vrindavan called Project Devi, where we rescue girls from being sold as child laborers, being sold into child marriages and child prostitution. Some girls are as young as 5 or 6 years old. And they're sold in for these causes. So we rescue them and we give them free food, free education, free healthcare, and उसके ज़रिए हम उनका सशक्तिकरण करते हैं. Because जब उन्हें एजुकेशन मिलता है तो फिर वो ज़िंदगी में कहीं आगे बढ़ पाती हैं, अपने राइट्स, अपने जो हक है समझ पाती हैं. तो मुझे लगता है कि हम एक ऐसा बदलाव ला रहे हैं. जब शुरुआत किए थे 8 साल पहले तो एक स्कूल था और few hundred rescued girls. आज हमारे 3 स्कूल हैं, चौथा बन रहा है और हज़ारों लड़कियों को हम बिल्कुल 100% फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड फूड दे रहे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़कियों की आर्मी तैयार हो रही है जो न सिर्फ देश को बदलेगी बल्कि पूरे विश्व को बदलेगी. सॉरी, लेडीज़ फर्स्ट. बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने. मुझे लगा कि एक कॉन्सर्ट है तो कॉन्सर्ट के प्लेटफॉर्म में लोग सिर्फ एंटरटेन होने के लिए आएंगे. भाई हमें फलाने को सुनना है, कोल्ड प्ले को सुनना है, तो हम आके ये जो बातें दिल से कर रहे हैं शायद उसे ठीक से लोग रिसीव नहीं करेंगे. इनको सीरियस बातें हैं, लेकिन हर शब्द पर, हर वाक्य पर लोगों ने तालियां बजाईं, चीयर किया. तो मुझे लगता है कि इस कॉन्सर्ट में 80,000 good hearts are beating, 80,000 good hearts are beating today in MMRD at the Global Citizen concert. And I think they all want to do something for a better India and a better world. Coldplay. Yeah, Bollywood we see all the time in all the and now is the season for that. All the award shows will come. हमारे दोस्तों की हम performances देखते रहेंगे. But Coldplay is a novelty. Chris Martin's dude. देखिए, डीमोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं आप. मैं बहुत सहमत हूँ. मुझे लगता है कि कोई भी जंग जब आप लड़ते हैं तो दिक्कतें तो आएंगी. त्याग, तपस्या करना ही पड़ेगा और पूरे देश को करना पड़ेगा. हमारी आदत है कि हम हमेशा गवर्नमेंट की ओर उंगली उठाते हैं और बोलते हैं ये क्यों नहीं कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं. हमारे ओर भी उंगलियाँ उठाइए और पूछिए कि हम क्या कर रहे हैं. वो बहुत ज़रूरी है. जब आप बीमार होते हैं और डॉक्टर आपको इंजेक्शन देता है तो आप डॉक्टर को गाली देते हैं क्या, उसे मारते हैं क्या? वो बीमारी दूर करने के लिए इंजेक्शन दे रहा है तो दर्द तो होगा ही, लेकिन आपके अच्छे के लिए हो रहा है वो. तो मैं चाहता हूँ, और बहुत सारे लोग हैं जो बातें कर रहे हैं कि भाई इतने लोग कतार में खड़े हैं, इतनी इनकन्वीनियंस हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं, पर वो सिर्फ बातें कर रहे हैं. मेरी कंपनी जो है कर्म, जो अफोर्डेबल हाउसिंग बनाती है गरीब लोगों के लिए, हमने अपने ऑफिस के 400 से ज़्यादा लोगों को अपने ऑफिस में आने से मना कर दिया. बोला कि आप ऑफिस नहीं आएंगे, आप जितने ATMs दिख रहे हैं आसपास जहाँ पे लोग खड़े हैं घंटों घंटों, आप उनको जाके पानी, बिस्किट्स, खाने की चीज़ें फ्री देंगे. तो अगर हम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं. बोलना बहुत आसान है, करके दिखाना अलग है. ये मेरी एक मित्र हैं, बहुत अच्छी डिज़ाइनर हैं, निवेदिता साबू. शी इज़ डूइंग रियली वेल ऑन द इंटरनेशनल स्केल नाउ and she designed this for me. It's a very cool denim blend and I wanted to represent something desi, something Indian. तो ये है, ये एक representation है कि आजकल जो हमारे फ़ौज के लोग हैं जो इतनी बहादुरी से टेररिज्म का सामना कर रहे हैं और उनकी बहादुरी के सामने हम सिर्फ कंप्लेंट किए जा रहे हैं. तो ये लोगों को और मुझको खुद को याद दिलाने के लिए है कि उनके तपस्या, उनके त्याग को हमें ध्यान में रखना चाहिए.
Oh, very soon, yeah. I've just finished shooting for Bank Chor with Yashraj. I've finished shooting for my international web series for Amazon with Excel with Farhan and Ritesh's company called Power Play, and that's based on the IPL. It's a very exciting concept. It will be released across more than 100 countries. I'm starting to shoot at the end of this month for my first Tamil film with the one and only superstar Ajit. So I call him Ajit Anna, and I'm really excited to play a really kick-ass role with him. And then in the first quarter of next year, I start Company 2. Right. So we are so excited that some 85,000 global citizens are here tonight. But what's even more important is that over the last 2 months, these 500,000 members of Global Citizen now have taken more than 2 million actions. From tweets, emails, phone calls, petitions. These actions will encourage the world leaders and the business leaders who are here tonight to make multi-billion-dollar commitments to ending extreme poverty. So the commitments you see on stage tonight are the direct result of the actions of Global Citizens. It's a cause and effect. And so for us, we want to sustain that now for the next 15 years. Because for us, this is not a short-term commitment. What we care about, above all else, is seeing an end to extreme poverty within our lifetime. And to do that, we need a sustained movement here in India, in the United States, in the UK, in Canada, across Indonesia. This needs to be a truly global movement. That's why we're called Global Citizen. Prime Minister Narendra Modi has been so incredibly supportive of the movement, whether it's been inviting us to meet with him at his residence in Delhi, or whether it's been the long conversations we've had with his staff about how best to approach it, or whether it's been coming to Central Park and delivering an incredible speech that inspired global citizens back in the United States. The Prime Minister has been with us through this journey, and we are so thankful to his office and to the state of Maharashtra also, but also to Poonam Mahajan, also to Chief Minister Fadnavis, everyone who's got behind this initiative. It's been really amazing to see that there's been this unified political support behind the movement to end extreme poverty. We couldn't be more thankful. Thank you. We're expecting quite a lot. We expect that this will be one of many. As a matter of fact, we're partners in this with Global Citizen, and we are hoping that we will have a 15-year relationship in India, and every year there will be a new concert and there will be a new goal for that concert. So this year it's sanitation, and today is World Sanitation Day, World Toilet Day. So maybe next year will be Education Day or Poverty Day or Environment Day, and hopefully the concert will happen in another city and we'll go with this movement all around India. But I think the biggest expectation is that through the platform that the Global Citizen has and the popularity it has with young people, it will allow for young people to get involved in the issues that are really important to society. So lots of hopes. Today is a good start, and then let's see how it goes. Sorry? Look, I think for anybody who comes to India, and I've only spent a year and a half of my assignment in India, but I think for everybody who comes to India, even for a short visit, the one absolute impression that everybody takes away is the country's full of energy. Things are happening. There is a beat that you don't find in many other places in the world. Look, India is growing at an amazing pace. I think it's grown already for 2 decades. My personal prediction is that in the next 10 years, India will be growing at close to 10% growth, or maybe even higher double digits. I think incomes in India will double or triple in the next decade. So I personally am very, very positive about what's happening here. And
And that's why I think growth alone does not resolve poverty. But it does trickle down, and then it is the, I think, the role of government, civil society, NGOs, but also citizens themselves, and this is where Global Citizen really helps, because if they then drive development in an equitable way where nobody is left behind, then you actually achieve the goal. Sorry, what do I expect? Look, we are actually, interestingly, you asked that question because coincidentally we are now going through the formulation of our next 5 years, 6 years in India. So literally as we speak, in the next few days, we are negotiating what we're going to be doing and on what we're going to be focusing as the United Nations in India. I think it will be the issues of poverty, education, healthcare, energy, environment, sanitation. So they coincide, I think, with the priorities that India establishes for itself. As far as our relationship and our collaboration with the government, it's been very, very good, at least as far as I'm concerned in my watch here. We're talking about interesting solutions and how to scale them up and how to deal with things together. So I'm very positive, I'm very optimistic. Look, I mean, I think it's not a secret to anybody that India was starting from a very low point 2 decades ago when the liberalization and the opening happened. I think the numbers in many areas testify that the progress has been tremendous, but it has been uneven. I mean, the Prime Minister and the others themselves speak of issues of sanitation, of malnutrition, of the quality of education and health, of poverty. So the ambition is very high, but I think the momentum is there, and that's the positive message that I can share, is the momentum is there to deal with these issues in the coming 10-15 years, which is when the Sustainable Development Goals need to be fulfilled. Look, he's an inspirational leader. As an economist and as a development professional, it's difficult for me to disagree with many of his priorities or aspirations. I mean, he wants an India that is more equal, an India that is more just, an India that is more inclusive, an India that is free from poverty and want and despair. And you know, what more can one say? Now, you know, how these calls and these programs get implemented on the ground, I think that's where the government is focusing, and that's where we need to focus as well together with them, because it's that last mile. It's what ultimately the citizen and every Indian feels in their villages, in their schools, in their hospitals, is what determines reality, correct? And I think it's widely accepted that there are some, you know, issues that still have not happened, but they need to happen urgently. Thank you, thank you, thank you. I have to say that Global Citizen is an incredible platform. वो युवा पीढ़ी को जोड़ता है, उनमें एक जागरूकता पैदा करता है. And I had the good fortune of being on stage today and facing a sea of amazing people who are here because of their commitment to action and participation. And I got to speak about nature. And I got to speak about the relevance and the importance of rivers and the access to clean potable drinking water to every citizen of the world. And I got to introduce Mr. K.T. Rama Rao, who has committed the second largest commitment on the Global Citizen India platform, which is of 9,000 crores and to make potable drinking water accessible to every household in Telangana. So
it was a really wonderful moment for me. कैसा लगा आपको? मतलब करीब 80,000 लोग यहाँ पर हैं और कैमरा नहीं दे रहे थे आपका, कैसे आप एंट्री करते कितना प्रभावशाली रहा आपका? मैं खूबसूरती के बारे में नहीं जानती, मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि अगर दिल अच्छा हो और आप दिल से खुश हो और आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो वो दिखता है, और अगर वो लोग खूबसूरत लगे तो I am just overawed by everything that everyone has done. 9,000 people have come together to make this event possible, and I can't imagine how difficult it must have been for each of them. I am a huge Coldplay fan. मैं कुछ महीनों पहले I was in Barcelona to watch them live. तब मैंने सोचा नहीं था कि एक दिन वो हमारे देश में परफॉर्म कर रहे होंगे. So I'm over the moon that they're here, and मैं खास करके उनकी फ़ैन इसलिए हूँ क्योंकि उनके जो लिरिक्स होते हैं गानों के, वो हर गाने में ना एक बहुत खूबसूरत एहसास होता है और मैसेज होता है. एंड आई थिंक अप एंड अप इज़ गोइंग टू बी सो सिम्बॉलिक टू टुडे एंड टुडेज एक्टिविटीज़ एंड कमिटमेंट्स दैट एवरीबडी इज़ मेकिंग. हाँ, मैं इतना जश्न का माहौल है. मैंने आपको आंसर तब तो दे दिया था, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि आप लोग अब ये जवाब फिर दूँगी तो आप लोग यही चलाएंगे, बाकी सब अच्छी चीज़ें भूल जाएंगे. बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा. आई थिंक कि ये जो ग्लोबल सिटीज़न हो रहा है इन इंडिया, इट्स वेरी नाइस. पहली बार इंडिया में हो रहा है, एंड इतने सारे आर्टिस्ट्स हैं तो उनके साथ ऑन द सेम स्टेज परफॉर्म करके इट फील्स रियली रियली गुड. बहुत अच्छा लगता है. यू फील वेरी कनेक्टेड इवन दो लाइक वी डोंट नो ईच अदर, पर सब एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग. जो ऑडियंस है, जो क्राउड है, वो बहुत मतलब दे वेरी नाइस, हैप्पी एनर्जी. सो या the thing is, so there are 17 developmental programs that they have, out of which 3 India is going to be taken care of. So my main problem has always been with hunger. I feel like hunger is something that really bothers me. भूख जो है, I hope कि वो मिट जाए हमारी कंट्री से, and जो भी हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए towards that. तो मुझे रेनबोज बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि मेरे बालों में क्यों नहीं डाल दूँ रेनबो. नहीं, थक नहीं गई. 7 मिनट का परफॉर्मेंस था मेरा, लेकिन गर्मी थी ना स्टेज पे, तो दैट वाज अ लिटिल बिट ऑफ एन इशू. पर अभी कूल डाउन हो गया है शाम तक. आई थिंक एक छोटा सा मैसेज शायद देना चाहूँगी कि अगर हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं, हमारे पास बहुत कुछ है. अगर हम वी कैन हेल्प द पीपल जिनके पास कुछ है नहीं या कम है, तो आई थिंक कि बहुत छोटा एफर्ट है. सो हम सबको करना चाहिए. अगर आप बताना चाहें तो जितना इकोनॉमिक टर्मोइल सब हुआ है, डेफिनेटली पीपल हु आर जिनका इनकम ज़्यादा नहीं है, जो ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स नहीं यूज़ करते, डेबिट कार्ड्स यूज़ नहीं करते, जो ज़्यादा कैश पे डिपेंड करते हैं, डेफिनेटली उनको थोड़ा फ़र्क पड़ा है. आई कैन सी, बट आई फील दैट ये डिसीजन जो मोदी जी ने लिया है वो बहुत ही अच्छा डिसीजन है, एंड आई थिंक बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट डिसीजन लिया उन्होंने, एंड आई होप दैट इट बेनिफिट्स आवर कंट्री. थैंक यू गाइस. Thank you. 80,000 करीब क्राउड है और उस हिसाब के साथ भी आप
बहुत अच्छा लगा. आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव. यहाँ पर अपने बैंड के साथ 3-4 गाने करने का मुझे एक मौका मिला और मुझे तो बहुत खुशी है कि जो क्राउड है, जो ऑडियंस है, जो लोग आए हैं यहाँ पर सपोर्ट करने इस ग्लोबल सिटीजन इनिशिएटिव को. यहाँ 1 बजे से वो लोग आए हुए हैं और काफ़ी मतलब 8-9 घंटे हो गए अब, मगर बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब कोई शिकायत नहीं कर रहा. किसी को नहीं लग रहा कि गर्मी बहुत थी, ये नहीं है, वो नहीं है. सब जानते हैं कि ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है और हम सब के लिए और हमारे बच्चों के लिए जो एक फ्यूचर है उसके लिए बेटर होगा. मैं पिछले 3 सालों से मर्द इनिशिएटिव को चला रहा हूँ, विच इज़ मैन अगेंस्ट रेप एंड डिस्क्रिमिनेशन. तो यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी एंड एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है. सो आई एम हियर सपोर्ट. I think the whole concept of and the whole initiative is fantastic, and the fact that it is taking place in Mumbai, in India, I think it's important. I am a brand ambassador of UN for gender equality, for he for she. I think we are looking at a possibility of the world having equal empowerment for men and women by 2030. And I think the other causes that are also in the morning, I presented 4 most amazing Indian women onto a seminar where the stories are so inspirational. So I'm very happy to be part of this, and I think the kind of atmosphere I'm seeing here is phenomenal. I think it's fantastic, and it's also very happy to see that the people are happy and standing in a line. I think it does. You see, the fact, the main thing that happens with this kind of a thing is that it gets a face. It is talked about. We do not sometimes know what is happening. How did so many other things reach smaller towns? If you go to smaller town villages, there are so many people who are doing amazing work. This is the kind of concept which is a kind of a shabashi to them, and it will reach. It is taking a little time, but then कहते ना इरादों में बुलंदी हो तो कुछ भी हो सकता है. आपका प्रश्न तो टेढ़ा ही होगा ना, कुछ बोलिए. आई थिंक इट्स अमेजिंग. सुबह स्टार्ट हुई थी और सुबह मैंने होस्ट किया था परिणीति के साथ. 4 सेगमेंट होस्ट किए थे और मुझे लगता है कि ये जो इवेंट है बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि इंडिया तब तक सुपर पावर बन नहीं सकता जब तक हम हेल्थ, सैनिटेशन, पॉवर्टी और जेंडर इक्वालिटी को नोटिस नहीं करते, सॉल्व नहीं करते. तो आई थिंक दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर. Of course, I think I support a child, and apart from that, there are a lot of causes I support, and I do a lot of stuff with NGOs, be it performing or singing for the kids, and I think it is the need of the hour. If you are a public figure, then I think you are an opinion leader of sorts, and you really affect a lot of people. So I think you should do it. As I said, people who are in the public eye, commoners, the masses, they notice them a lot, and if they are supporting something, they also get encouraged to do that. So I think that's the only motive of this, because most of the people, they are youth icons like Sachin Tendulkar, Shah Rukh Khan. Everybody is performing. All the out of the young generation, we were there. Parineeti, Arjun, Ranveer, everybody was there. So I think if they are taking up a cause and people are watching it, they'll definitely follow it. जी. नॉट एट ऑल. आई थिंक ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, क्योंकि इतने बड़े स्केल का कॉन्सर्ट इंडिया में मैंने विटनेस नहीं किया है, और ग्लोबल सिटीजन लास्ट टाइम न्यूयॉर्क में हुआ था, इस बार इंडिया में हो रहा है, और कोल्डप्ले बहुत ही एक बहुत बड़ा नाम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर. तो आई थिंक हमारे नेशनल लेवल के जितने एक्टर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं और एक कॉज के लिए परफॉर्म कर रहे हैं. आई थिंक इट रियली विल सेंड अ पॉजिटिव मैसेज इन द मासेस. या आई थिंक मैं न्यूज़ में ज़्यादातर देख रहा हूँ, ट्विटर पे फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो शूट कर रहा हूँ लखनऊ में, और वहाँ पर प्रोडक्शन ही सब कुछ देख रही है. पर मुझे लग रहा है कि आम जनता पे काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, उनको मुश्किलें हो रही हैं. पर मैं चाहता हूँ लॉन्ग रन में आई होप इसका पॉजिटिव इफेक्ट हो.
great fun. I hosted 2-3 segments, and of course Coldplay was the most amazing thing. बहुत मजा आया friends के साथ देखा. So it was a great experience. Highlight of the show? Coldplay of course. मैंने इस साल 2-3 महीने पहले भी उनका concert देखा था, and I got to see it again today. So it was amazing. They are amazing. Thank you They're so my much. favorite. और Thank you. आपकी परफॉर्मेंस को और आपके होस्टिंग को बहुत पसंद किया लोगों ने. Really? जी, जी. आपको पसंद आया कि नहीं? जी जी सब लोगों को बहुत तहे दिल से और शुभकामनाएं आपको. एक इंटरनेशनल शो को आपने होस्ट किया है. Thank you so much. Thank you my friend. Thank you. Thank you. बहुत मजा आया. I really enjoyed it. It was beautiful, especially in the end when Coldplay was singing together with it was beautiful, really. आप खुद एक रॉकस्टार लग रही हैं. इतनी मतलब अरे मैं energy. तो rockstar हूँ. They are very shy. Okay. So sir, like a big moment for India and like हमारे लिए एक अच्छा moment है कि Coldplay यहाँ पे आने. Correct. माइकल जैक्सन के बाद अगर कोई बड़ा स्टार हुआ, इतना बड़ा इवेंट हुआ है, तो आज रात को हुआ है ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल, एंड वी शुड थैंक एवरीबॉडी फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू द चीफ मिनिस्टर, एवरीबॉडी जिन्होंने सपोर्ट किया. और सबसे बड़ी बात हमको देना चाहिए मिस क्राफ्ट को, क्योंकि माइकल जैक्सन को भी उन्होंने ही लाया था और कोल्डप्ले को भी आज वो लेके आया, और क्या बढ़िया इवेंट है. And thanks to Ms. Raj Naik also for like a fabulous person. I'm always a supporter of a good cause. Thank you so much.